Hello, Shelly, Sharita, Raghav, Mushkan, Kushi, Aman, Janagam. I hope I'm audible to you. Come, good morning. Aji, और बताएं सब ठीक ठाक है अभी जुडिशरी एनसीईआरटी बुक्स आर चेंजिंग राइट एंड एनसीईआरटी बुक्स ने जुडिशरी के बारे में क्या लिख दिया करप्शन के बारे में इट इज अ करप्ट इंस्टीट्यूशन नाउ व्हाट जुडिशरी हैज टेकन सो मोटो एक्शन and it has asked to NCERT to reframe the book, reframe the phrase basically. Anyway, but everyone knows that judiciary is corrupt. Look at the World Corruption Report. India's corruption rank was 88 few years ago. Now it is approximately 92. मुझे पता नहीं साल का कितना है, but last year it was 92. And one of the most three corrupt institutions in India are subordinate judiciary, police, and politician. This is basically as report says. ठीक है? Not yet तमन्ना कुछ भी लिखवाया नहीं है अभी तो शुरू भी नहीं किया है अच्छा क्या पढ़ाना है ये बताओ रोल ऑफ गवर्नर राइट इन स्टेट पॉलिटिक्स राइट आज है फरवरी 26 दो दिन के बाद ये खत्म हो जाएगा ये महीना so what I need to talk about role of governor in state politics राइट अगर एक वर्ड में बोलो तो बड़ा कंट्रोवर्शियल है मोस्ट कंटेस्टेड इवन पीपल फील दैट कि गवर्नर का पोस्ट ना बहुत बदलाव होना चाहिए इट्स नॉट एबोलिशन ऑफ द ऑफिस बट देयर इज अ नीड ऑफ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू ब्रिंग चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ द गवर्नर एनीवे कुछ कल मैंने थोड़ा थोड़ा बताया था राइट ठीक है कुछ लिखवाया भी था नहीं क्या बोला था आते ही लिखवाऊंगा ऐसे करके कुछ बोला था Ajay told you that look the थोड़ा और एक्सप्लेनेशन कर दो 1952 to 1967 the role of governor was very much limited right but if you look at since 1967 the role of governor has become very much controversial why is it so because state is ruled by another party and center is ruled by another party. As I told you that governor is a nominee of the central government because appointed by the central government. And if the center is ruled by another party, let's say BJP at the current, and the state is ruled by, for example, TMC in Bengal, okay, or DMK in Tamil Nadu. Now here in this context, the center uses the office of governor, right, to tame the elected government of the state. Right, earlier Congress used to do it. है ना पॉलिटिक्स क्या है एक नाचने वाला कठपुतली है जिसके हाथ में पकड़ आ गया वही नचा रहा है राइट उस समय सरकार किसकी थी दूसरे की थी राइट फॉर एग्जांपल जनता फैमिली की गवर्नमेंट हुआ करती थी डीएमके की सरकार हुआ करती थी इधर लेफ्ट की सरकार है केरला में थी 1957 में राइट सो लुक एट सिंस 1967 द रोल ऑफ गवर्नर हैज बिकम वेरी मच significant right now in what context the governor played a role now governor played a very role right कल मैंने आपको बोला था कुछ लिखने के लिए
आपने काम किया, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, राइट, जुडिशियल, नहीं किया, अच्छा ठीक है, बट उसको करना है, उसको करके खत्म कर लेना, कुछ भी काम बैकलॉग में नहीं छोड़ो, मेरे लिए कहना है, बट आप आई कैन अंडरस्टैंड कि हाउ लॉट्स ऑफ क्लासेस, ठीक है, उसके बाद बहुत सारे काम है, बट ट्राई टू फिनिश इट एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। Now look at the controversial rule of the governor. एक तो मैंने कहा कि आपको जो कंट्रोवर्शियल रोल है, एक है भाई आर्टिकल 356 को लेकर के, राइट, ठीक है, और दूसरा बहुत सारी चीज को लेकर के है, जैसे फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ठीक है, और डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली, ठीक है, और समनिंग टू द असेंबली, और फॉर एग्जांपल नॉट पासिंग द बिल, or referring the bill to the bill to the president, ठीक है, as I told you that look at Tamil Nadu governor was sitting on 23 bills passed by the assembly, ठीक है, and that irritates the state government, got the idea, right? जरा इसको थोड़ा सा लिखिए तो just note it down, लिखिए, role of governor in state politics is very much controversial and contested. The role of governor in state politics, is very much controversial and contested. Is very much contested, right? In second point to write, लिखिए, from 1952 to 1967 there was a one party dominance. From 1952 to 1967 there was one party dominance. The Congress party governed at the center as well as states. The Congress party governed at the center as well as in states, and there was no significant role of governor. The Congress party governed at the center as well as in states, hence there was no role of governor or no significant role of governor in state politics. Hence there was no significant role of governor in state politics. Next point, right, like since 1967 several state governments are ruled by different party. Several state governments are ruled by different party than that of the party at the center, at the center. Okay, for example Congress ruled at the center and non-Congress party ruled in several states. Non-Congress party ruled in several states.
or in recent decade, BJP ruled at the center. Or in recent decade, BJP ruled at the center. And non-BJP party ruled in several states. And non-BJP party ruled in several states. Got the idea? Right. Now change the point and write, like, the governor role is contested regarding, the governor's role is contested regarding, the governor's role is contested regarding appointment of chief ministers, appointment of chief minister, appointment of chief minister, comma, dissolution of a state assembly, dissolution of a state assembly, dissolution of a state assembly, comma, recommendation to the president regarding, recommendation to the president regarding imposition of Article 356. Imposition of Article 356. What the idea? Comma लिखिए, reserving the bill, reserving the bill, reserving the bill for consideration of the president, reserving the bill for consideration of the president, reserving the bill for consideration of the president, of the president. समझ ये सब issues हैं. Basically these are the major issues for which, you know, this role, governance role is very much contested. Got the idea? Right? Right. हो गया, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर. देखिए, the role of governor, the role of governor is contested, the role of governor is contested due to two broader region, first situational discretion, situational discretion, situational discretion, and second is कहता है यहाँ पर constitutional discretion, constitutional discretion. इसमें हमने बांट लिया है situational discretion and constitutional discretion. अब लिखिए the role of governor in situational discretion. Role of governor in situational discretion. The role of governor in situational discretion. देखिए, the governor has power to appoint chief minister. The governor has power to appoint chief minister.
The governor has power to appoint chief minister whenever there is a hung assembly. Whenever there is a hung assembly. Whenever there is a hung assembly. Okay. Further, the governor dissolves the house, or summon the house, or summon the house, or summon the house according to his wishes. According to his wishes. ठीक है, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. इन दिस कॉन्टेक्स्ट द सुप्रीम कोर्ट in this context the supreme court in Nabam Arabia, in this context the supreme court in Nabam Arabia, कल बताया था, याद है? Nabam Arabia. and Nabam Arabia कब आया था? 2016. Nabam Arabia and ये भी लिखिए. The state of Tamil Nadu, the state of Tamil Nadu, versus the government of Tamil Nadu. The government of Tamil Nadu. Case 2025. In Nabam Arabia, the Supreme Court in Nabam Arabia case and the state of Tamil Nadu versus government of Tamil Nadu 2025 held that the governor has to take aid and advice. The governor has to take aid and advice given by Council of Ministers. The governor has to take aid and advice given by the Council of Ministers, headed by Chief Minister, to exercise his power, except constitutional discretion. Except constitutional discretion. बट ये भी जजमेंट अजीब है, क्योंकि आप देखोगे कि बट ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पर फॉर्मेशन ही नहीं है. हाँ, डिसोल्यूशन में वो लेगा, एडवाइस लेगा, ठीक है. डिसोल्यूशन, summoning the house, convening the house, he can take the advice, right? He cannot exercise discretionary power. But formation पे नहीं हो पाएगा. Formation, of course, he will have such discretion power. And the office of governor shall remain controversial in Indian politics until there is a amendment to the constitution. जैसे आपको जो लेजर वाला जो कंपोनेंट है कि the governor shall hold office during the pleasure of the president, वो क्लॉज हट जाए. भाई एक बार आप गवर्नर आ गए तो गवर्नर को क्या रहेगा? चीफ मिनिस्टर को खुश करना रहेगा. अब क्या है यहाँ पर? गवर्नर ऐसा है कि चीफ मिनिस्टर को भी खुश करना होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी खुश करना होता है. सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा करना होता है, स्टेट गवर्नमेंट ना खुश रहे कोई दिक्कत नहीं है, राइट? Look at Jagdeep Dhinker, he became the vice president of India. He was a governor of which state? West Bengal. He was very unpopular. सेंट्रल गवर्नमेंट को खुश करेंगे तो आपको मिलेगा. इंडिया में ये जो खुश करने की जो आदत है ना, इनहेरेंट है, मैं बता रहा हूं, राइट? साइकोपेंसी की इतनी ऊपर लेयर तक है, राइट?
और बहुत सारी बातें हैं that teaching में भी है. Look at, we basically creates followers. We create followers. We don't provoke the students, right? उसको भाई provoke करो, उनको दो कि खुद भी independent think करो, right? That should be the education. But क्या है यहाँ पर follower है? UPSC is all about following. Like in UPSC education is all about following. नहीं, इंडिपेंडेंट थिंक करे तो फिर जाके अपना यूनिवर्सिटी में रिसर्च करो, यहाँ पर वो वैलिड नहीं चलेगा. होता है ना? एनीवे, व्हाट हैव वी रिटन? The governor has to follow the aid and advice given by the Council of Ministers, by the Chief Minister, except the constitutional discretion. Now write constitutional discretion. Write constitutional discretion and the role of governor. Constitutional discretion and the role of governor. देखिए, Article 200 gives power to the governor. Article 200 gives power to the governor. Article 200 gives power to the governor to reserve the bill passed by the state assembly Article 200 gives power to the governor to reserve the bill passed by the state assembly for the consideration of the president. 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 Next point you write, like further, Constitution does not mention a time framework. The Constitution does not mention a time framework. Further, the Constitution does not mention a time framework within which the Constitution does not mention a time framework within which the governor should return the bill, or withhold the bill, or give assent, particularly pocket veto में लिखवाया हूं, particularly pocket veto है, right? देखिए, in such context, next point बना दो, in such context, governor sits on bill. Governor sits on bill. Okay, for example, Tamil Nadu governor was sitting on. For example, Tamil Nadu governor was sitting on 23 bills passed by the state legislature. Tamil Nadu governor was sitting on 23 bills passed by the state legislature. For example, Tamil Nadu governor was sitting on 23 bills passed by the state legislature. Similarly, governor of Kerala, Telangana, and West Bengal are sitting on bills passed by the state legislature.
passed by the state legislature. समझ में? देखिए इन नेक्स्ट पॉइंट, इन अप्रैल 2025, in April 2025, the Supreme Court has given direction. The Supreme Court has given direction that the governor should clear the bill. The governor should clear the bill. The governor should clear bill within 90 days. Within 90 days. इतना हो गया 3 month. हाँ, अब 3 month रहे तो 3 month, right? ठीक है, 90 days. And if the bill is sent to the president for consideration, or if the bill is sent to the president for consideration, comma, the president should clear it within 30 days. The president should clear it within 30 days. Within 30 days. In reaction to the Supreme Court judgment, the president asked a series of questions to the judiciary. The president has asked a series of questions to the judiciary regarding the constitutional position of the president. A series of questions to the judiciary regarding the constitutional position and power, constitutional position and power of the president and of the governor. ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन ऑब्जर्व किया, बड़ा मतलब ऐसा क्वेश्चन था फ्रेम्ड किया हुआ, इट वाज एक्चुअली लीगल एक्सपर्ट ने बनाया होगा, राइट? नाउ होता क्या है कि उसके बाद जुडिशरी हैज रिकंसीडर्ड दिस डायरेक्शंस, राइट? And in November, the judiciary has given another direction, another judgment. देखिए next point, देखिए in November 2025, the Supreme Court in November 2025, the Supreme Court in the state of Tamil Nadu versus the government of Tamil Nadu case, एक सवाल पूछूं इनफॉर्मली, मतलब इम्पोर्टेंट है बट होना चाहिए पता। मान लो कि मैंने आपको बताया कि जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है उसमें उसका लॉयर होता है, स्टेट का, गवर्नमेंट का, उसको बोलते हैं हम एडवोकेट जनरल। अब लड़ाई कहाँ है? गवर्नर और सरकार के बीच में। एडवोकेट जनरल किसका साथ देगा, किसके तरफ से लड़ेगा? गवर्नमेंट की तरफ से या गवर्नर की तरफ से? गवर्नर की तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से, इस गवर्नमेंट की तरफ से लड़ेगा, क्योंकि गवर्नर बस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होता है, राइट? जैसे मैंने कहा कि पूरा केक पे एक चेरी होता है, ठीक है? गवर्नमेंट दैट गवर्नमेंट इज वेरी मच इलेक्टेड गवर्नमेंट, पॉपुलर गवर्नमेंट। गवर्नर का ज्यादा कुछ नहीं होता है, राइट? तब में तो ऑफ कोर्स स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु है, उनको हायर करना पड़ा था,
lawyer. Anyway, क्या लिखा? In state of Tamil Nadu versus government of Tamil Nadu held that the governor should clear the bill. The governor should clear the bill passed by the state legislature as soon as possible. The governor should clear the bill passed by the state legislature as soon as possible. ठीक है? He has discretion to reserve the bill. He has discretion to reserve the bill for the president. He has discretion. Good morning. कहाँ थे? कोई बात नहीं, बैठो. He has discretion to reserve the bill. Okay. Further, next point. Further, Supreme Court held that. Further, the Supreme Court held that the president should clear the bill. The president should clear the bill as soon as possible. And the presidential decision to either assent or withhold is not open to judicial review. It's not open to judicial review. It's not open to judicial review. Good idea. Let's look at, this is the controversial, that is remain in the controversy, right? Article 200, 201 को ठीक से पढ़ना. मैंने पढ़ाया आपको, पढ़ाया है ना? क्या पढ़ाया? आर्टिकल 200 में क्या है? सारे वीटो हैं, सारी वीटोज है. ठीक है? कौन कौन सा? सस्पेंसिव वीटो भी है, सस्पेंसिव है, क्वालिफाइड है, राइट, और पॉकेट वीटो है. ठीक है? और एक प्रेसिडेंट के पास, क्या नाम है, गवर्नर के पास है कि वो रिजर्व कर सकता है बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. एग्जीक्यूटिव बहुत इंपॉर्टेंट, दोज हु आर अटेम्प्टिंग दिस टाइम, राइट? द गवर्नर इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु. हाँ, स्टेट गवर्नर, यस. ठीक है? गवर्नर, स्टेट ऑफ तमिलनाडु मतलब गवर्नर. ठीक है? गवर्नर इज हेड ऑफ द स्टेट, एंड हियर गवर्नमेंट इज, हु इज हेडिंग द गवर्नमेंट? चीफ मिनिस्टर, राइट? सो दैट्स व्हाई यही था. Yeah, one more thing that you write, article 356 and देखिए, article 356 and the role of governor. एक सब टाइटल दे दीजिए, डोंट राइट इन दिस. वो डिस्क्रिप्शन पावर भी पढ़ रहे हैं. आर्टिकल 356 and role of governor. ये भी क्वेश्चन सेटल्ड है बेसिकली. Article 356 and role of governor. Right, Article 356 empowers the governor. Article 356 empowers the governor. Yes or no? Suspensive, pocket, and absolute. Article 356 empowers the governor to recommend
to recommend for the imposition of presidential rule to the central government. To the central government. To the central government. आपको बताया मैंने कि पहले बार प्रेसिडेंट रूल कहां पर अप्लाई हुआ है? पंजाब में, उसके बाद बंगाल में, एंड नॉट बंगाल, केरला में, राइट? पहले बार पंजाब, सेकंड केरला 1957, and then thereafter if you look at there's an imposition of article 356 very frequent. इंदिरा गांधी यूज इट, बहुत यूज किया उन्होंने, राइट? मैं आपको बता दूं कि जब मोरारजी देसाई 1977 में आए ना, राइट, तो उन्होंने केवल गवर्नर नॉन स्टेट में नहीं बदला, ही इम्पोज्ड आर्टिकल 356 इन 9 states. Why? Because he thought that in जनरल इलेक्शन में तो मैं आ गया, राइट? तो पॉपुलर सोवरेनिटी किसके पास है? मेरे पास है. तो जिस स्टेट में, राइट, जिस स्टेट में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट है वो तो इलिजिटिमेट है, क्योंकि वहां पर अगर इलेक्शन कराओगे तो क्या होगा? जनता पार्टी आएगी. तो उन्होंने क्या किया? ही इम्पोज्ड इमरजेंसी, दैट इज स्टेट इमरजेंसी, इसको स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं, आर्टिकल 356, राइट? He imposed Article 356 in 9 states. Now Indira Gandhi came to power in 1980. She does the same, right? So it became very controversial things related to the federalism, because it is a federal matter, right? How center can impose, Article 356 and topple the elected government, right? Meanwhile, Ranjit Singh Sarkaria Commission came up, right, and which gave a recommendation. Sarkaria Commission held that the Article 356 should be imposed in rarest of the rare case. Article 356 imposed in the rule, in the rarest of the rare case. Now look at in 1992, right, Union government imposed president rule in 3 BJP ruled states, right? ठीक है, कर्नाटका, नागालैंड एंड मेघालय, ठीक है? इन टोटल 3 बीजेपी रूल, या इन टोटल इन 6 स्टेट्स गवर्नमेंट इम्पोज प्रेसिडेंट रूल. 6 में किया, 3 में बीजेपी रूल कर रही थी. नाउ सुप्रीम कोर्ट actually heard the case that is called SR Bomai case, very famous case, SR Bomai case, and the Supreme Court held that imposition of the president role was correct in case of Rajasthan, MP and HP, because there was a communal rights, right, due to the Babri Mosque demolition, right? वो जो tension था उस वक्त. But imposition of president role in Karnataka was wrong, right? So Supreme Court held that secularism is a basic structure of the Indian Constitution. Federalism is also basic structure of the Indian Constitution, right? You cannot impose president role, right, on your own wish. Got the idea? So Supreme Court invalidated the imposition of the president role in case of Karnataka, right? In 2005, make an example. In 2005, that time I think governor was Bhutta Singh, right? Now Bhutta Singh's son is in BJP, right? He's an MLA and minister. Anyway, वो लोग करते हैं. आप अगर देखोगे तो कुछ आपको मिलेगा 30 to 40% जो लीडर है बीजेपी को वो कांग्रेस से शिफ्ट करके आए, राइट? तो ऐसा चलता रहता है इनका गेम. Bhutta Singh imposed Article 356 in Bihar, right? And that was challenged in the court. Now court said Bhutta Singh's decision is unconstitutional, right?
How can you impose president's rule when there is a when there is a hung assembly? It's fine. There is a hung assembly. The governor should take the essence and give ample opportunity to the party to form the government, right? To make an alliance and realliance and make the form the government. You cannot impose president's role, right? And court also held that the federalism is a basic structure, which S.R. Bommai already argued that. In 2010, in BP Singhal case, Supreme Court, took a very stringent position against the imposition of Article 356. Supreme Court held that if the central government imposed Article 356 with a malified intention, and if the court found that this imposition was wrong, then the court will reinstate the state government. तुम गिरा दोगे हम खड़ा कर देंगे, right? Now let me tell you, here the Supreme Court put break on the imposition of Article 356. Right? And after 2010, if you look at the president rule, दो ही state में लगा है, as I remember, या तीन state में. One is recently Manipur, right? Now election has been held. One is Delhi, right? And third is Jammu and Kashmir. उसके बाद आप imposition नहीं देखोगे, कहीं नहीं है. So Supreme Court has arrested the imposition of Article 356 largely. Making sense? Right? अब Article 356 उतना use हो नहीं रहा है. But the idea लिखवाया मैंने कुछ नहीं, बट कहानी बताया बस. कुछ लिखवाया, कुछ लिखा हुआ है. Yes, Article 356 empowers the governor to recommend. Now write. Next point you write. लिखिए. The central government imposed Article 356 first time on Punjab. And second time in Kerala. Now next point you write, लिखिए. During Indira Gandhi regime, there was a frequent use of Article 356. अच्छा, ये कौन सा स्टेट है जिस पे सबसे ज्यादा बार प्रेसिडेंट रूल लगा है? Manipur. Yes, Manipur is a state which experienced 11 times. During Indira Gandhi regime, Article 356 was frequently used. During Indira Gandhi, Article 356 was frequently used. Got the idea? Now come to the point. लिखिए. Ranjit Singh Sarkaria Commission, 1988 recommended that. Ranjit Singh Sarkaria Commission 1988 recommended that. अच्छा, ये अपॉइंट हुआ था 1993 में और पब्लिश हुआ है इसका 1988 में, तो कहीं पर 83 दिखे तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि अपॉइंट हुआ था. हमने रिकमेंडेशन का डेट लिखा है. क्या लिखा? That Article 356 should be imposed in rarest of the rare case. Recommended that Article 356 should be used in rarest of the rare case. In rarest of the rare case. Next point, the Supreme Court in S.R. Bommai case उन्हीं का बच्चा चीफ मिनिस्टर था. एस.आर. बोम्मई वो चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका. उन्हीं का जो बेटा था बसवराज बोम्मई, वो भी चीफ मिनिस्टर थे अभी कुछ इन इस गवर्नमेंट से पहले. क्या लिखा? द सुप्रीम कोर्ट इन एस.आर. बोम्मई BOMMAI बोम्मई केस 1994
1994 held that arbitrary use of Article 356, arbitrary use of Article 356, arbitrary use of Article 356 violates federal features of the Indian Constitution. Violates federal features of the Indian Constitution. The Supreme Court observed that federalism is a basic structure. The Supreme Court observed that federalism is a basic structure of the Indian Constitution. Of the Indian Constitution. Now एक और जजमेंट है, लिखिए द सुप्रीम कोर्ट इन बीपी सिंघल केस 2010, द सुप्रीम कोर्ट इन बीपी सिंघल केस 2010, मैंने बीपी सिंघल पहले भी करवाया है बीपी सिंघल का, राइट, किसके लिए, अपॉइंटमेंट को लेकर के. द बीपी सिंघल केस इन 2010 held that the supreme, क्या लिखा, द सुप्रीम कोर्ट इन बीपी सिंघल केस 2010 held that Article 356 cannot be imposed in arbitrary manner. Article 356 cannot be imposed in arbitrary manner. Article 356 cannot be imposed in arbitrary manner. If the court finds that, Article 356 has been imposed without compelling reason, if the court finds that Article 356 has been imposed without compelling reason, then the Supreme Court can reinstate or reinstitute the government. The Supreme Court can reinstitute the government. Okay, hence, next point, hence the Supreme Court has put a break. The Supreme Court has put a break on arbitrary use of Article 356. On arbitrary use of Article 356. समझ में आ रहा है, right? That's done. That's done. So governor, yeah, executive that. Now write about chief minister. मैंने आपको बताया ये जो है ना, याद रखना, ट्रायंगल क्या है हमारा, यहाँ पर आर्टिकल 154, यहाँ पर आर्टिकल 163, 3 है एंड आर्टिकल 164. ये याद रखना है सीएम के टर्म में, और पीएम के टर्म में क्या याद रखना है, 53 या 74 एंड 75, राइट. इन तीनों से सारा कुछ मिल जाएगा. मल्टीपल टाइम्स वी हैव डिबेटेड दिस आर्टिकल, राइट. ठीक है, राइट. जैसे मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर बोला, आपको क्या बताया मैंने कि एवरीथिंग रिवॉल्व अराउंड द प्राइम मिनिस्टर, राइट, एट द सेंटर. ठीक है. नाउ इन स्टेट एवरीथिंग रिवॉल्व अराउंड द सीएम, चीफ मिनिस्टर, राइट. Everything revolve around the chief minister. Chief minister decides everything, right? The governor appoints chief minister,
and other minister on the basis on the advice of the chief minister. He decides the portfolio, he reshuffles, ठीक है? He declares schemes, yojana, yeah, schemes and programs of the government. He also appoints, the chairman of the state planning board. He acts the vice chairman of the zonal council जो होता है, ठीक है? He decide everything in the state. जो प्राइम मिनिस्टर बताया पैरेलल यहाँ पर है, ज्यादा तो है नहीं. फॉर एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर डिसाइड फॉरेन पॉलिसी, चीफ मिनिस्टर कैन नॉट डिसाइड. But there is called para diplomacy. Have you heard about para diplomacy? No, right? The half diplomacy done by the state chief minister. For example, let me give you an example. When Tamil Nadu chief minister goes to the America, what he does? He meets to the Tamils diaspora in Tamil Nadu, and he inspires them to come and invest in Tamil Nadu, right? Get culturally connected with Tamil Nadu, for example, right? ठीक है? So ऐसा नहीं कि chief minister decide नहीं करता. Look at Mamata Banerjee when the things are, when India has to deal with the Bangladesh, Bengal become very important. Bengal become very important. तो ऐसा नहीं कि chief minister decide नहीं करता है, right? That is called para diplomacy. अब देख लो, जब हम श्रीलंका से तमिल की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का रोल, राइट? बट बहुत माइनर है, ठीक है? अदरवाइज फॉरेन पॉलिसी में इनका नहीं है, अदरवाइज सेम रोल है जैसे चीफ मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर का है. लिखिए तो जरा इसको, लिखिए, द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एट अ स्टेट. The chief minister is the head of the government at a state. The chief minister is head of the government at a state. At a state, he is appointed by the governor. The governor and other ministers are appointed by the governor on the advice of the chief minister. On the advice of the chief minister. ठीक है? समझ में? The governor has power and functions in a state polity. गवर्नर नहीं, हमने चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ रहे हैं ना. आई एम सो सॉरी, सीएम. my slip of tongue. हम गवर्नर के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम चीफ मिनिस्टर के बारे में आ गए, राइट? देखिए, द सीएम हैज सेम रोल इन स्टेट पॉलिटी as the prime minister has role in national politics. अब मुझे बताओ कि हमने प्राइम मिनिस्टर का रोल क्या क्या पढ़ा था? याद है क्या क्या पढ़ा था? कि भाई पार्लियामेंट में क्या रोल होता है, यही पढ़ा था ना. इन रिलेशन टू द पार्लियामेंट, याद है? इन रिलेशन टू द गवर्नर, इन रिलेशन टू दिस, पढ़ा था ना. यहां पर इन रिलेशन टू असेंबली हो जाएगा. देखिए, द रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर इज फॉलोइंग. द रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर of CM in state politics is following. First लिखिए, पांच छह लिख दीजिए, बहुत है, रहने दीजिए. फर्स्ट लिखिए, the chief minister is the leader of the house.
The chief minister is a leader of the house. The chief minister is a leader of the house. He, she advises the governor, advises the governor, advises the governor to convene the house, to convene the house, or prorogue the house, or prorogue the house, Prorogue, prorogue the house, or dissolve it, or dissolve it. Third, she reshuffle, she reshuffle and reallocate ministry. She can reshuffle and reallocate ministry. Next, CM play a vital role in framing welfare policies. CM plays a vital role in framing वेलफेयर पॉलिसी, ऐसे लिखा है ना, वेलफेयर पॉलिसीज। आपको पता है कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा वेलफेयर देता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु गवर्नमेंट इज हाईएस्ट प्रोवाइडर ऑफ द राइट। और वहां पर यह भी कहा जाता है कि भाई ये तो कॉन्सेप्ट ये है कि फ्रीबीज कहा जाता है। आई डोंट एग्री विद द फ्रीबीज। भाई अगर हमारी सरकार है तो हमारी एक्सपेक्टेशन है, तो क्या बुराई है इसमें? नहीं, राइट। अब बुरा किन को लगता है? टैक्स पेयर्स को, ऑफ कोर्स, कि भाई टैक्स तो हम देते हैं और पैसा टेलीविजन कोई और ले जाता है, लैपटॉप कोई और ले जा रहा है। इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यू आर नॉट योर ओन, राइट? यू आर नॉट an island. You are basically product of the social process, right? Many people have played a very important role in your making of you, nahi, right? So now time has come to pay back to the society. एक टाइम आया है कि आपको पे बैक करना है। किसके लिए? उसके लिए जो आपके साथ थे एक टाइम पे। मान लो कि स्कूल का चपरासी है या प्यून है या छोटा जो काम कर रहा है, वो भी तो काम कर रहा है ना। मान लो आकर के लाइट जला दे रहा है, पानी लाया, चाय लाया, वो भी तो काम कर रहा है ना, बट वो टैक्स नहीं पे कर रहा है, दैट्स फाइन। बट कैन यू से दैट, कैन यू रिमूव देम फ्रॉम द सोसाइटी? विल यू सस्टेन योरसेल्फ विदाउट देम? नो, यू कांट। तो आपको क्या चाहिए? आपको उसका सर्विस तो चाहिए, बट यू कांट पे बैक। यू आर नॉट विलिंग टू पे बैक टू देम। व्हाट द आइडिया? ठीक है। There is a professor of economics in IIT Delhi, Ritika Khera, right? She has a wonderful, argument. She has a book called Revenue or Welfare. We have talked about in DPSP. हमने बहुत बात कर ली है इसमें, right? Anyway, move. यहाँ पर एक कालिया स्कीम था। कहाँ पर? उड़ीसा में। उड़ीसा also is a welfare state, right? बहुत वहां पर मिड डे मील को लेकर के, फूड को, फूड का जो पॉलिसीज है, दैट इज वेरी स्ट्रांग इन ओडिशा। एनीवे, नाउ मूव अहेड। देखिए, चीफ मिनिस्टर इज अ मेंबर ऑफ इंटर-स्टेट काउंसिल। सीएम इज अ मेंबर ऑफ इंटर-स्टेट काउंसिल, member of interstate council, and the governing council of Niti Aayog, and the governing council of Niti Aayog. And the governing council of Niti Aayog.
नेक्स्ट लिखिए द चीफ मिनिस्टर acts as a vice chairman of the concerned zonal council. The chief minister is a vice chairman of the concerned zonal council. The chief minister is a vice chairman of the concerned zonal council. It is based on rotation. It is based on rotation. अच्छा, जोनल काउंसिल का चेयरपर्सन कौन होता है? Who is the chairperson of the zonal council? How many zonal council we have? 5 या बताया था ना 6, राइट? और कौन होता है जोनल काउंसिल का? 9 होम मिनिस्टर और पीएम होते हैं इंटरेस्टेड काउंसिल का, ठीक है? इंटरेस्टेड काउंसिल का चेयरमैन होते हैं, पीएम होते हैं, राइट? या नीति आयोग के जनरल काउंसिल के एचएम होते हैं, राइट? और जो वाइस चेयरमैन होता है वो होता है चीफ मिनिस्टर और रोटेशन बेसिस पे होता है, ठीक है? 4-5 हो गया, 6 हो गया, अब रहने दो, बहुत है, चीफ मिनिस्टर बहुत पढ़ लिया, कभी नहीं आएगा, बट यू शुड नो. Now I'll talk about a state legislature, but after 10 minutes break. Right. So we have it's now 10:46. I'll begin at 11. चलेगा? हाँ? ठीक है. चलो. So I'll resume at 11.
जो यूनियन एग्जीक्यूटिव में मैंने रिपीटेशन किया है, थोड़ा सा अंतर है, ऑफ कोर्स सिमिलर तो है नहीं, ठीक है। कोर्ट में हम कोर्ट को देखेंगे, जुडिशरी भी बता दूं, बताइए। देखो अगर जुडिशरी है, इन केस ऑफ जुडिशरी इफ यू लुक एट सुप्रीम कोर्ट इज आर्टिकल 124 to 147, हाई कोर्ट इज आर्टिकल 214 to 231, and subordinate court basically article 233 to 237. That is about judiciary. Make this table. But yes, at the same time we have to finish it. पूछो yes. Now you can ask raise question. और डरते क्यों हो गलत पूछने में? मतलब कुछ भी पूछो, तुम अगर उठपुटांग पूछोगे तो मैं उठपुटांग जवाब दूंगा, यही हो सकता है ना, ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है, कुछ लोग हंस लेंगे, ऑल राइट। Now, let me talk about state legislature. As we have shown in this table, right, which part deals with the state legislature? The part 6 and article 168 to article 212, right? So look at part 6, article 168 to article 212 deals with state legislature. Okay? Now, if you look at state legislature, there are unicameral and bicameral. Bicameral legislature. अच्छा, what are कौन सा bicameral है? How many bicameral legislature we have? 6. अच्छा, कौन कौन सा है? देखो इधर बिहार एंड यूपी, बंगाल का था खत्म हो गया, बंगाल का नहीं है, बिहार एंड यूपी, राइट। उसके बाद साउथ में चले जाओ, राइट। साउथ में तुम महाराष्ट्र को थोड़ा सा टुवर्ड साउथ मानो, ठीक चलेगा, महाराष्ट्र, उसके बाद आंध्रा, यस, तमिलनाडु नहीं, आंध्रा जाना है, आंध्रा से उसका छोटा भाई तेलंगाना, ये दोनों है, राइट। और उसके बाद आ जाओ तेलंगाना के नीचे जाओ तो कर्नाटका, 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 राइट। छह हो गए क्या? हाँ, छह हो गए। और भी स्टेट में थे ऐसा की, ऐसा नहीं, तमिलनाडु had by legislature and Bengal had, Jammu and Kashmir had, but वो खत्म हो गया। Now if you look at unicameral legislature, rest of the states have unicameral state legislature, and then we have also UTs, right? हमारे पास UTs भी है, ठीक है, and 3 UTs have legislature, है ना, और रेस्ट के पास नहीं है, राइट। कौन कौन है जिसके पास लेजिस्लेचर है? दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर हैज लेजिस्लेचर।
Now question is, what could be the maximum strength of the state legislature? What could be the composition of the state legislature? ये समझ में आ गया, लिख लिया आपने। अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कितना हो सकता है? तो यह है कि भाई 500 मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम हो सकता है 40। मिनिमम कितना हो सकता है? 40। No, 60। मिनिमम हो सकता है 60। However, there are some states whose strength is less than 60. Right? For example, Goa has 32. No, Goa no. Sikkim has 32. Goa and Mizoram has 40. So, right, strength of the state legislature. Strength of the state legislature मतलब कि legislative assembly. Assembly जहां पर दो हाउस होता है ना, राइट, मान लो कि बिहार है, तो जो लेजिस्लेचर होता है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विधानसभा नहीं बोलते इसको, राइट। ये दो हाउस है, उसमें एक विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है, राइट। इसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसको क्या बोलते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको बोलते हैं विधानसभा। ये है हमारा विधानसभा और यह है विधान परिषद। ठीक है, ठीक है। अब क्या है कि इसका जो स्ट्रेंथ है ना, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी 5। लेकिन द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, the maximum strength of the state legislative assembly is fixed at 500. The maximum strength of the state legislative assembly is fixed at 500 and minimum is 60 and minimum is 60. मिनिमम कितना है? 60 है। देखिए, however, Sikkim has 32 members. However, Sikkim has 32 members. Comma, Goa and Mizoram have 40 members each. Goa and Mizoram have 40 members each. ठीक है, अब इनका जो मेंबरशिप कैसे कहां से है? Yes, yes, go ahead. So just wanted to check, sir. These is not based on delimitation the number of census, sorry, population, sir. As per the census, and the seats has been allocated to the state, sir, for number It of is, MLAs. it is. I'll just, I'm coming to that point. And I'm coming to that point. If you look at the, delimitations, even the state assembly's delimitation is fixed by the 2001 census. While I taught you parliament, I also taught about certain component of the state legislature, their limitations. So look at the members, right? Members are basically directly elected by the people on the basis of universal adult franchise, right? लिखिए, members are elected directly on the basis of universal adult franchise.
Now, right, method of election. Method of election. What is the method of election? FPTP. FPTP. Right, electoral constituency. Electoral constituency को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बोलते हैं, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बोलते हैं, कभी कभी इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं. तो डिस्ट्रिक्ट में ये कंफ्यूज मत हो जाना जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट है, नहीं, दैट इज कॉल्ड इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट. राइट, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं. ठीक है. अब ये इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन ड्रॉ करता है? It is drawn by the delimitation commission, right? Delimitation commission draws and redraws boundary of territorial constituency. Draw and redraws the boundary of territorial constituency. मैंने क्या कहा? इलेक्टोरल भी बोलते हैं, टेरिटोरियल भी बोलते हैं, इसको इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं. अच्छा, मैं बता दूं, इस एफपीटीपी को ये भी बोलते हैं सिंगल मेंबर प्लुरलिटी सिस्टम, एसएमपीएस. ठीक है. बट आपसे जब भी पॉलिटी में पूछेगा तो यही पूछेगा, वो नहीं डालेगा. सिंगल मेंबर प्लुरलिटी सिस्टम. सिंगल मेंबर मतलब क्या होता है? वहां से एक इलेक्ट होंगे, वोट सब करेंगे. सिंगल मेंबर प्लुरलिटी सिस्टम. सिंगल मेंबर विल बी इलेक्टेड. अच्छा, दूसरा भी होता है जिसको बोलते हैं एमएमपीएस, मल्टी मेंबर प्लुरलिटी सिस्टम. एक से ज्यादा एमएलए होंगे. राइट, इंडिया में नहीं होता है, जर्मनी में होता है. ठीक है, तो उसको एमएमपीएस बोलते हैं. तो वो टर्म आपके लिए यूज नहीं होगा, आपके लिए एफपीटीपी यूज होगा या पीआरएसटीवी यूज होगा या पीआर यूज, मैक्सिमम पीआर यूज होता है. राइट. Yeah, so have you written? Delimitation Commission draw and lay down the boundary of territorial constituency. Okay, next point. In 1951, 1961, 1971, 1971 and 2002, Delimitation Commission was constituted. Delimitation Commission was constituted. इसको मैंने डिटेल में पढ़ाया था कब? जब मैंने आपको पार्लियामेंट पढ़ाया था, याद है? When I discussed the parliament in 1951, 1961, 1971 and 2002. ठीक है. अच्छा, क्यों ऐसा किया गया? मैंने आपको बताया कि आर्टिकल कहता है कि the electoral constituency shall be readjusted after each census. तो सेंसस जब 1951 का हुआ तो सेंसस मतलब इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई. राइट, ये इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई. फिर दूसरा इलेक्शन कब होता है? 1961 में, फिर से बना. तीसरा कब होता है? 97 में, फिर से बना. फिर हुआ क्या? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. ये हुआ, और ये कब हुआ? 1976 में. और इसमें क्या कहा गया कि भाई ऐसा करो कि 25 साल के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो फ्रीज कर दो. जो स्ट्रेंथ है, चाहे वो लोकसभा का स्ट्रेंथ हो, चाहे स्टेट असेंबली का स्ट्रेंथ हो, लेट इट बी फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस. गॉट आइडिया? जब 25 साल के लिए आपने फिक्स कर दिया, राइट, तो इसमें 1976 में 25 साल ऐड करो तो कितना होगा? 2001. यानी 2001 में इसको ओपन होना चाहिए. राइट. अब 2001 में अगेन एक दूसरा अमेंडमेंट एक्ट होता है जिसको बोलते हैं 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट.
और 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हुआ क्या? द फ्रोजन सीट continued for the next 25 years. यानी कि 2001 में 25 जोड़ोगे कितना होगा? 2026, यही ना, राइट? 1976 में 25 साल के लिए क्या गया, उसके बाद फिर से 25 साल के लिए क्या गया, कितना हुआ? 2026. नाउ अभी डिलिमिटेशन का मामला चल रहा है, बहुत जोर पे पकड़ने वाला है. आफ्टर दिस ईयर यू विल सी, राइट? बात ये चल रहा है कि भाई क्या होगा नहीं होगा. नॉर्दर्न स्टेट और साउदर्न स्टेट के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है पॉपुलेशन का. अगर डिलिमिटेशन हुआ, लेट मी टेल यू, दैट विल अंडरमाइन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साउदर्न स्टेट्स, राइट? बीजेपी को कोई जरूरत नहीं है तमिलनाडु की या कर्नाटका की, उसका यूपी बिहार, राइट? और ये जो यूपी बिहार और इधर राजस्थान और महाराष्ट्र और गुजरात, ये सब अगर स्ट्रॉन्ग होल्ड रहे, साउथ में कुछ नहीं फर्क पड़ता. जीत लो, आ जाओ, अपोजिशन में ही बैठोगे, राइट? रोड्स ऑफ द पार्लियामेंट गोज फ्रॉम द यूपी एंड बिहार, राइट? एंड महाराष्ट्र, द मोस्ट पॉपुलस स्टेट. गॉट आइडिया? ये बहुत इश्यू मिलने वाला है आपको, ठीक है? समझ में आया? अच्छा, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये हुआ कि द स्ट्रेंथ ऑफ द पार्लियामेंट कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 25 इयर्स ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस. अभी भी जो लोकसभा का जो स्ट्रेंथ है, राज्यसभा का स्ट्रेंथ है, वो किस बेसिस पे है? 1971 सेंसस में. बट this 84th constitutional amendment act allowed the state constituency to be readjusted on the basis of 1991 census. You remember? हमने कर लिया इसको. एंड फिर क्या होता है, इसी साल में एक दूसरा अमेंडमेंट पास होता है जिसका नाम है 87. यस, सो 42nd CAA, 84th CAA एंड 87th CAA. ये याद रखना है डिलिमिटेशन को लेकर के, राइट? 87th CAA ने क्या किया? It allowed the state assembly to be readjusted on the basis of 2001 census, and therefore you can see in 2002 you have delimitation commission. What idea? Now we have only 4 delimitation commission, right? अब डिलिमिटेशन कमीशन होगा जब 2026 में पॉपुलेशन काउंट विल बी, इट्स स्टार्टेड नाउ, इट्स स्टार्टेड. अभी तो वो काउंट कर रहे हैं कि आपके घर में टेलीविजन कितना है, फ्रिज कितना है, चेयर कितना है. दे हैव स्टार्टेड, राइट? राइट, एंड थिंक फ्रॉम नवंबर इट विल स्टार्ट काउंटिंग यू. ठीक है, समझ में? इट इज अ मॉडर्न फेनोमेना, पहले कभी ऐसा होता नहीं था. It is started by the modern state. आपको पता है पहली बार सेंसस कब हुआ है? 1881, but 1872 was also, but 1881 was a proper census. पहले सेंसस नहीं होता था. Now state started, counting man, woman, children, है ना? SC, ST, Hindu, Muslim. नहीं, we think along the line of population. गवर्नमेंट भी बोलते देखो मुस्लिम का जो पॉपुलेशन है बढ़ रहा है. अरे आप देखेंगे कि जो कॉम्युनलिज्म आता है इंडिया में, वन ऑफ द रीजन वाज सेंसस. वन ऑफ द रीजन मुस्लिम को भड़काया कि देखो तो इतना पॉपुलेशन है, तुमको तो दबा देंगे बिल्कुल. हाँ, यस 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 यस, राइट. अभी कहीं पे बोलते हिंदू खतरे में है, क्यों? मुस्लिम इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है. लुक एट. तो ये जो काउंटिंग है ना, इट्स कॉल्ड, देयर इज सम नेम, इट्स कॉल्ड गवर्नमेंटालिटी, राइट? एनीवे, हैव यू नोटेड डाउन? व्हाट हैव यू नोटेड डाउन? Yeah, 2002 delimitation commission was constituted, right? ये भी लिखा दूं 50 सेकंड या छोड़ दूं इसको? लिखवा दूं, लिखिए लिखिए. After delimitation of 1971, after delimitation of 1971,
After delimitation of 1971, the parliament passed the 42nd CAA in 1976. The parliament passed the 42nd CAA in 1976, which has frozen the strength of the parliament, which has frozen the strength of the parliament, which has frozen the strength of the parliament, as well as of state assembly, for the 25 years, for the 25 years, on the basis of 1971 census. On the basis of 1971 census. समझ में आया? Right? Next line you write, देखिए, in 2001, the parliament passed. In 2001, the parliament passed 84th Constitutional Amendment Act. The parliament passed 84th Constitutional Amendment Act, which has extended the frozen seats of the parliament, for the next 25 years. For the next 25 years. Okay, it means the strength of the parliament, is based on 1971 census, on the basis of क्या लिखा? No, बस एक मिनट देना, मैं बोल कहाँ रहा हूँ, सोच कहीं और रहा हूँ. क्या देखिए, it means the strength of the parliament is based on 1971 census. बस उतना ही. मैं कहीं सोच और रहा हूँ, फिर मैं कहाँ हूँ मैं? Yes, got the idea? Go ahead. Yeah. It can be used to proportionate the seats of members in the parliament. No, if not election commission, right? Not by census, not by population. Because there is a vast difference between the northern and southern states. Yeah. So what other method can be to give representation? Yeah, other rules can be look at the equal representation, right? Each state should have equal representation and fix it 25 or 35 or 500 or 1000, doesn't matter. So that could be equal. But equality is not a correct principle. Equal should be treated equally. But when there is an inequality already, then there should be plurality of methods should be used in order to give representation. Got the idea? So there could be many methods, right? But look what will happen now. You will see this debate in the next year. Yeah, next year, right? In 2001. Hang on. 1971 census हो गया. लेकिन however, the 84th Constitutional Amendment Act, the 84th CAA, allowed to readjust. However, the 84th CAA allowed to readjust the strength of the state assembly on the basis of 1991 census. Objective बहुत आते हैं यहाँ से. On the basis of 1991 census.
ठीक है, अब लिखिए, इन 2001 द पार्लियामेंट पास्ड 87th CAA. In 2001, the Parliament passed 87th CAA, which allowed to readjust, electoral constituency, on the basis of 2001 census. On the basis of 2001 census. ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, इसमें जो SC और ST का रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज रिजर्व. ठीक है, उसमें आप on reserve seat no candidate from general category can contest, right? ठीक है, वोट सब देंगे बट कंटेस्ट कौन करेगा? ये हो गया. अब आ जाओ, ठीक है, क्वालिफिकेशन. क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया, एज है 25 years, एंड एबव. थर्ड क्या है? शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. Fourth, other criteria as prescribed by the law. Other criteria as prescribed by the law. अच्छा, मुझे लॉ बताओ, कौन सा ये लॉ? क्या मतलब है लॉ का? राइट, या क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ भी है, RPA एक्ट 1951 भी है. तो वो जो क्वालिफिकेशन. अच्छा, डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? ये बताया है डिस्क्वालिफिकेशन MLA के लिए भी और MP के लिए वहां पर. राइट, कौन सा आर्टिकल है जो डिस्क्वालिफिकेशन को के बारे में बोलता है? नहीं, 101 नहीं है, 191. देखो तो जरा, चेक करो. लेट मी चेक. About 191 डिस्क्वालिफिकेशन. ठीक है, कौन सा है आर्टिकल? 191 MLA के लिए. अच्छा, MP के लिए कौन सा है? अब तुम सही बोल रहे हो, 101. लेट मी चेक, जस्ट लेट मी कंफर्म. 101 और 102. इट इज 102. ठीक है, इसके लिए यहां है, ये है बस आर्टिकल 101. ठीक है, और या मैंने ये बात कर लिया है आर्टिकल 101, राइट? और एज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, अब लॉ पर यहां क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ, RPA एक्ट 1951. We have talked about anti-defection law, 10th schedule, and then RPA Act 1951. डिस्क्वालिफिकेशन हो गया. अब आ जाओ, you do it. Done. Qualification, disqualification. Done. Okay. Vacation. Vacating of seats. Article 190. Article 190. You remember? हमने कर लिया था इसको, कैसे वेकेट होगा.
राइट, कि मान लो कि कोई एमएलए है, नॉट गोइंग टू द हाउस consecutively 60 days, then without informing, then he may be vacated the seat. ठीक है, or any MLA is punished under a law, right, and that punishment is 2 years and more, then can be disqualified. So that is a. Now come to the speaker. Okay, as same as the speaker of the Lok Sabha. जो लोकसभा के पास पावर है वही पावर स्पीकर के पास है। वहां पर स्पीकर जो है ना, स्पीकर के मामले में वहां पर कौन करेगा? अच्छा, स्पीकर के इलेक्शन का डेट कौन फिक्स करेगा? यहाँ पर गवर्नर करेगा। वहां पर प्रेसिडेंट हो जाता है, यहाँ पर गवर्नर ले लीजिएगा, राइट। वहां पर जो प्रेसिडेंट रोल निभाता है, यहाँ पर गवर्नर निभाएगा। ठीक है, स्पीकर का वही पावर है जो वहां पर है। अच्छा, स्पीकर का क्या क्या पावर है? कि मेंटेन द डिसिप्लिन ऑफ द हाउस, प्रिसाइड्स ज्वाइंट सिटिंग, नॉट समन द हाउस, समन हाउस गवर्नर का काम है, राइट। बेसिकली एडजॉर्न द हाउस, ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड करेगा, ये सब काम वही है, राइट। वोटिंग में क्या स्पीकर फर्स्ट टाइम पे वोटिंग करता है? नहीं, केवल रिमूवल टाइम पे। अदरवाइज स्पीकर वोट ऑन केस ऑफ टाई, दैट इज कॉल्ड कास्टिंग वोट। तो वही है, खत्म हो गया ये। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, वहीं पे जैसा वहां है was exactly as similar as है। Now let me talk about the state legislative council, the second house. State legislative council. अब जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं इसका? मेंबर्स आर elected indirectly. Members are elected indirectly. ठीक है, अच्छा, कंपोजिशन क्या है इनका? कंपोजिशन मतलब कितना मेंबर हो सकता है, राइट। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो हो सकता है, ठीक है, that should not be more than the 1/3 of the total strength of the state assembly. मिनिमम हो सकता है 40। ठीक है, तो लिखिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ of LC could be 1/3 of the total strength of the legislative assembly. मैक्सिमम स्ट्रेंथ इतना हो सकता है, मिनिमम स्ट्रेंथ कुड बी 40, इससे कम नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है द साइज ऑफ द एलसी डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द एलए, लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए, हेंस द साइज ऑफ legislative council depends on the size of legislative assembly. देखिए, however the parliament
decides the actual strength of the legislative council. However, the parliament decides actual strength. However, the parliament decides the actual strength of the legislative council. वो डिसाइड वो करेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन बस कहता है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है और मिनिमम स्ट्रेंथ कितना है, और ये है आर्टिकल 171. ठीक है, आपको बेयर एक्ट के थ्रू होके जाना है. ठीक है, you have to go through the बेयर एक्ट. आर्टिकल 171 है जो मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेंथ के बारे में बात करता है, कंपोजिशन की बात करता है. ठीक है, अब क्या है कि जो टोटल इलेक्शन है इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, राइट? उसमें से 1/3 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द members of the local bodies like municipality or panchayat. 1/3 members are elected by the member of the state assembly. ठीक है, 1/12 members are elected by the graduates of 3 years, right, standing and residing within the state. ऐसा नहीं कि किसी ने बिहार में ग्रेजुएट कर लिया और बिहार से बाहर रह रहा है, उसके पास इलेक्टोरल राइट से नहीं. ठीक है, who is staying there and have actually passed graduation from that state. आप उस स्टेट से ग्रेजुएशन पास किए हो, आप वहां पर रेसिडेंस हो, you can get the franchise right. Now 1/12 the strength is actually are elected indirectly by the teachers, by the teacher basically. Teachers of the secondary, not primary, secondary and above. ठीक है, और उसके बाद बच जाता है 1/6 seats. They are nominated by the government. What the idea? So लिखिए जरा, देखिए of the total strength of the legislative council, members are elected following. Members are elected in following ways. Okay. First, 1/3 members are elected by local bodies like municipality or panchayat. Right? 1/3 members are elected by state assembly, right? From outside of the assembly. From एक मिनट कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, एक मिनट. 1/3 members are elected by the state assembly. Now question is, can MLA could be elected as MLC? It's not possible. तो यही समझाना चाह रहा हूं मैं कि 1/3 members are elected by the state assembly, right? देखिए एक वर्ड फिर अलग से ज्वाइन कर दीजिए. देखिए the state assembly will elect members for the legislative assembly. The state assembly will elect members for the legislative council from outside of the legislative assembly. कोई MLA है, MLC नहीं बन सकता. ठीक है, अब now third you write, देखिए 1/12 members
are elected by graduates. By graduates. By graduates of 3 years. Graduates of 3 years standing and residing in that state. Standing and residing within that state, within the state. One by 12 members are elected by the graduates of 3 years standing and residing within the state. Now, fourth, 1 by 12 members are elected. 1 by 12 members are elected by teachers in the state, but not lower than the secondary school teacher. 1 by 12 members are elected by teachers in the state, but not lower than the secondary school. ठीक है, कितना बच गया, ये टोटल काउंट करोगे 5 या 6 हो जाएगा, राइट? And now fifth is, देखिए 1 by 6th member are nominated by 1 by 6th members are nominated by governor. 1 by 6th members are nominated by governor. ठीक है, तो ये है हमारा टोटल स्ट्रेंथ कैसे होता है, राइट? अब मैनर ऑफ इलेक्शन क्या होता है? मैनर ऑफ इलेक्शन होता है यहां पर नॉट एपीटीपी, पीआरएसटीबी, जैसे राज्यसभा के लिए होता है पीआरएसटीबी, पीआरएसटीबी, पीआरएसटीबी। अच्छा, जैसे लाइक राज्यसभा इट इज अ परमानेंट बॉडी, लाइक आरएस इट इज अ permanent body, hence not subject to dissolution. Not subject to dissolution. ठीक है, अच्छा टेन्योर क्या होता है इनका? टेन्योर वैसे ही होता है जैसे हमने वहां पर बात की है, देखिए एज सिमिलर एज इन द केस ऑफ पार्लियामेंट। राइट, ये 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, ठीक है, और फिर हर मतलब जो एक तिहाई है 1/3 member are retired after 2 years, after 2 years or alternative year कह सकते हैं। So that is about what are their functions, लिखिए as same as their राज्य सभा function, देखिए as same as राज्य सभा। ठीक है, यहाँ पे इनको मनी बिल में पावर नहीं है, फाइनेंशियल बिल में पावर नहीं है, ठीक है। एक अंतर है राज्यसभा और यहाँ से, राज्यसभा ये फेडरल चैम्बर, बट दिस इज नॉट अ फेडरल चैम्बर। द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एलसी डज नॉट रिप्रेजेंट द फेडरेशन, इट रिप्रेजेंट्स द वेरियस इंटरेस्ट इन द स्टेट, ठीक है। तो इस वक्त कह सकते हो कि यार जब आप सर बता रहे थे कि क्या है, अब मैंने फेडरलिज्म जब पढ़ा है तो आपको बताया कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा मेंबर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, राइट। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर भी तो लोकल बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ फेडरेशन, यू कैन से, ऑफ कोर्स, इजंट इट?
Since 1/3 members are elected by the local panchayat, right, or municipality, they represent the interest of the local panchayat. तो वो भी कहना सही नहीं हुआ. फेडरल चैम्बर भी type, it's a kind of federal chamber, not a federal chamber in a classical sense, but it's kind of federal chamber, right? अच्छा, अब एक केस है कि भाई ये कुछ स्टेट में है, कुछ स्टेट में नहीं है. How state legislative council can be created and can be abolished, right? So लिखिए creation and abolition. That is the last point. Creation and abolition of state legislative council. लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर आप देखोगे तो 169 इसके बारे में बात करता है, ठीक है, एबोलिशन के बारे में और क्रिएशन के बारे में. कौन सा आर्टिकल है? 169, ठीक है. अब ये क्रिएट भी होगा और एबोलिश भी होगा, लेकिन उसको सबसे से पहले स्टेट असेंबली को इनिशिएट करना है. The state assembly pass a resolution with a special majority either for creation or for abolition. अगर आपको बनाना है तो भी और उसको एबोलिश करना है तो भी, राइट? जब स्टेट असेंबली पास कर देगी तब ये भेजेगी पार्लियामेंट को, एंड देन पार्लियामेंट कैन गिव सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल अप्रूवल्स, राइट? लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी क्रिएटेड और एबोलिश्ड. समझ में आया? लिखिए आर्टिकल 169, Article 169 talks about abolition or creation of legislative council. Article 169 talks about abolition or creation of legislative council. Article 169 talks about abolition or creation of state legislative council. What idea? लिखिए, for creation or next point, for creation or abolition of the legislative council, the state assembly must pass a resolution. The state assembly must pass a resolution by a majority of the total membership of the assembly. The state assembly must pass a resolution by a majority of total membership of the house and a majority of not less than and a majority of not less than and a majority of not less than 2/3 of the member, a majority of not less than 2/3 of the members present and voting. Present and voting. Present and voting. Next point, done now. Okay. Once the state assembly passes a resolution, it is sent to the parliament. It is sent to the parliament. It is sent to the parliament, which can give its approval with simple majority.
which can give its approval with simple majority. Hence, the Legislative Council can be created or abolished accordingly. Hence, the Legislative Council can be created or abolished accordingly. Accordingly. Got the idea? Right? All right. कुछ facts about the Legislative Council. Right? लिखिए facts about Legislative Council. Few facts जो कि आपके prelims में काम आएगा. देखिए the AIA-DMK led government of Tamil Nadu, the AIA-DMK, right? Have you heard about this party? M.G. Ramchandran actually was led the establishment. It was actually the faction of the DMK. क्या लिखा? AIA-DMK abolished the state's second chamber in 1986. The AIA-DMK abolished the state second chamber. इसको second chamber भी कहते हैं. Second chamber in 1986. ठीक है, तो ये facts हैं. लेकिन however DMK supports the second chamber. However, DMK supports the second chamber. DMK supports second chamber. Next point to add, लिखिए the Bengal government abolished the second chamber. The Bengal government abolished the Legislative Council in 1969. The Bengal government abolished Legislative Council in 1969. Right now, right? Rajasthan has passed resolution. Rajasthan has passed resolution for the creation of Legislative Council twice and sent to the central government. However, central government did not consider it. Okay, recently Odisha recently नहीं हो गया 5 साल पहले, हाँ, but 5 साल recently है in human history में. Yeah, recently Odisha has passed a special resolution for creation of Legislative Council and send it to the central government. तो ये सब कुछ फैक्ट्स हैं. ठीक है, ये हो सकता है कि आ जाए, टकरा जाए, राइट? ऑल न्यूज़पेपर रिपोर्ट कभी भी अगर ऐसा कुछ हो न्यूज़पेपर में सारा आ जाता है, सारा डिटेल्स आ जाता है. सर रिपीट थोड़ा बता दो ना, खत्म हो गया आपका. टुमारो आई विल टॉक अबाउट जुडिशरी.
Rajasthan has passed resolution for the creation of legislative council twice and sent to the central government. However, the central government did not consider it. What are the implications of the state legislative council's abolition or creation over the state or central government? I'll answer you tomorrow, but let me tell you. मान लो कि राज्यसभा को हम हटा दे तो क्या होगा? Right, there is a there is a राज्यसभा is called गाड़ी के पीछे क्या लगा रहता है? स्टेपनी. राज्यसभा is called स्टेपनी. स्टेपनी का हम यूज कब करते हैं गाड़ी में? होता है क्या? होता है गाड़ी में? बहुत रेयर केस में कभी हुआ है, होता है, अदरवाइज होता है क्या? नहीं होता है. सिमिलरली राज्यसभा के लिए भी बोला जाता है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए भी बोला जाता है कि भाई क्या क्यों रखा है आपने इसको. So there are argument in favor of legislative council or the Rajya Sabha, and there is an argument against the Rajya Sabha or legislative council. So argument in favor and no argument against, I'll explain you tomorrow, right? And tomorrow I'll talk about the issue. Okay. Okay, Kanika, I'll resolve it because it will take time. Okay, that's a good, I'm so happy that you have asked questions. आज इतना ही, मिलते हैं कल. And have you get noticed that you have class on Saturday? Not yet. You have class on Saturday, 3 hours. 3 घंटा बैठना पड़ेगा. We'll have a break for 15 minutes, 20 minutes, as you wish. No issue at all. I'll try to finish your course and then rest time we will discuss the test. ठीक है? टेस्ट डिस्कशन होगा, सिलेक्शन मतलब आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन डिस्कस करो, आई विल डिस्कस दोस क्वेश्चंस. ठीक है? आई विल फोकस टू फिनिश द कोर्स. ठीक है? चलो, सी यू देन टुमारो. हाँ.